बैंक आईक्यू में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम 33 इम्पॉर्टेंट वर्ड सब्स्टिट्यूट्स को देखेंगे। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं और साथ ही साथ में हम सेंटेंस कंप्लीशन के सेकंड प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जहाँ पर हम 15 क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके सेंटेंस कंप्लीशन से रिलेटेड है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेकिन लेट्स जस्ट quickly take a look at 33 one word substitutes। हम यहाँ पर one word substitutes को देखेंगे। आप वीडियो को पॉज कर करके इन one word substitutions, आपको जो सेंटेंस दिया गया है उनके substitutes को साथ साथ में लिखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और ऑफ कोर्स उसके बाद हम सेंटेंस कंप्लीशन के सेट को कवर करेंगे। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं अपने किसी भी प्रकार के डाउट्स से रिलेटेड, जो कि वर्बल एबिलिटी से रिलेटेड है, तो उसके लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। वन हु डज़ नॉट बिलीव इन गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में बिलीव नहीं करता है, उसे हम एथीस्ट कहते हैं। सो अ पर्सन हु डज़ नॉट बिलीव इन गॉड इज़ एक्चुअली कॉल्ड एन एथीस्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो कि गॉड में बिलीव करता है, सो वन हु डज़ नॉट बिलीव इन गॉड इज़ एन एथीस्ट, बट अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड इज़ एक्चुअली कॉल्ड अ थीस्ट। तो थीस्ट कौन है? थीस्ट एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बिलीव करता है गॉड में, और एथीस्ट एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बिलीव नहीं करता है गॉड में। वन हु नोज एवरीथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जिसे सब पता है, इज समवन हु इज़ ओमनीसियंट। ये हम अक्सर नैरेटर्स के लिए यूज़ करते हैं। ओमनीसियंट नैरेटर, एक ऐसा नैरेटर जिसे सब कुछ पता है। सो ओमनी, दैट इज़ प्रेजेंट ऑलवेयर, नीसियंट इज़ एक्चुअली हैविंग नॉलेज। सो वन हु नोज एवरीथिंग, इज नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, इज़ omniscient. One who's present everywhere. So God is usually considered to be present everywhere, is omnipresent. देखिए बहुत सिंपल था ये, present everywhere. So he present everywhere, omni and present आ रहा है, omnipresent is someone who's present everywhere. One who is all powerful, एक ऐसा व्यक्ति who's all powerful is omnipotent. So you can revise it again. एक ऐसा व्यक्ति जिसे सब कुछ पता है is omniscient. एक ऐसा व्यक्ति who's present everywhere is omnipresent. एक ऐसा व्यक्ति who's all powerful is omnipotent. ये तीनों के तीनों आप यहाँ पर अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। omniscient, omnipresent, omnipotent. omniscient, omnipresent and omnipotent. वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि रिलीजन के अगेंस्ट एक्ट करता है, उसे हम कहते हैं हेरेटिक। सो एक ऐसा व्यक्ति हु इज़ एक्टिंग अगेंस्ट रिलीजन इज़ एक्चुअली अ हेरेटिक, राइट? सो हेरेटिक इज़ अ पर्सन हु इज़ एक्टिंग अगेंस्ट रिलीजन। वन हु ऑफर्स वन सर्विसेज, अपनी सर्विसेज को ऑफर करता है, इज़ अ वॉलंटियर। समवन हु इज़ वॉलंटियरिंग, सो अपनी सर्विसेज को ऑफर करने वाला व्यक्ति इज़ अ volunteer. One who hates mankind, very simple and important, misanthrope. यहाँ पर misanthrope is the correct answer. So anthrope यहाँ पर man, so misanthrope is a hater of mankind. So यहाँ पर Jonathan Swift was considered to be one of the misanthrope because he used to hate mankind. वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश इज़ अ कैनिबल, एक ऐसा व्यक्ति जो कि ह्यूमन फ्लैश को खाता है, उसे हम कैनिबल कहते हैं। दैट पर्सन इज़ अ कैनिबल, सैवेज, हैवान। वन हु लिव्स एट द सेम टाइम एज द अदर इज़ कॉल्ड अ कंटेम्प्ररी, एक ऐसा व्यक्ति जो कि सेम टाइम पे रहता है एज द अदर इज़ अ कंटेम्प्ररी। One who's more than 100 years old is a centenarian. So ऐसा व्यक्ति who's completed a century, right? Centenarian. One who's more than 100 years old is a centenarian. One who is 80 years old, एक ऐसा व्यक्ति जो कि 80 years old है, is an octogenarian. Is an octogenarian. So octogenarian, one who's 80 years old. वन फॉर होम द वर्ल्ड इज़ अ होम, एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए घर होम है, इज़ अ कॉस्मोपॉलिटन। सो कॉस्मोपॉलिटन, अ पर्सन फॉर होम द वर्ल्ड इज़ अ होम, इज़ अ कॉस्मोपॉलिटन पर्सन। वन हुज इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि पेन है या प्लेजर है, इज़ अ वेरी स्टोइक पर्सन। सो स्टोइक यहाँ पर इज़ द करेक्ट आंसर।
One who's given to pleasures of flesh, ऐसा व्यक्ति who's given to pleasures of flesh is actually called a hedonist or an epicure. So आप इसको hedonist भी कह सकते हैं. So hedonist is also correct and epicure is also correct. So यहाँ पर food also you can include because epicure is given to pleasures of food. One who studies things of the past, ऐसा व्यक्ति जो कि things of the past को study करता है is an antiquarian. Antiquarian एक ऐसा व्यक्ति जो कि past की चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ता है. One who does not drink wine, ऐसा व्यक्ति जो कि wine या alcohol नहीं पीता है is called a teetotaler. So someone who's not drinking wine or alcohol is a teetotaler. One who is new to a profession, ऐसा व्यक्ति जो कि नया है profession को is a novice, neophyte भी हम कह सकते हैं. So someone who is new to a profession is a novice or a neophyte. One who is a habitual drunkard, we can call them suit or a tooper or a suit is a habitual drunkard. One who knows many languages, ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत सारी languages पता है is a polyglot. So Tagore was considered to be a polyglot who is knowing various languages. One who cuts precious stones, ये important है, is a lapidist because he is engaging in lapidary, that's the art of cutting precious stones. So एक ऐसा व्यक्ति जो कि precious stones को cut करता है is a lapidist. One who deals in cattle, ऐसा व्यक्ति जो कि cattle में deal करता है, so that particular person is actually called a drover. Henry Lawson जो Australian writer है, उनकी drover's wife एक बहुत ही famous short story है. So one who deals in cattle is a drover. One who cures eye diseases, ऐसा व्यक्ति जो कि eye diseases को cure करता है is an oculist. Oculist is one who is curing eye diseases. One who loads and unloads ships, ऐसा व्यक्ति जो कि load या unload करता है ships को is called a stevedore. Stevedore is a person who is loading as well as unloading ships. One who compiles a dictionary, ऐसा व्यक्ति जो कि डिक्शनरी को compile करता है is a lexicographer. Lexicographer is a व्यक्ति, is a person जो कि डिक्शनरी को compile करता है, lexicographer. Then moving on to another one word substitute that we have after lexicographer, one who walks in one's sleep, ऐसा व्यक्ति जो कि चलता है अपनी sleep में is actually somniloquist. So that person is actually somnambulist. So यहाँ पर a person who's walking is a somnambulist. ऐसा व्यक्ति जो कि चलता है सोते में, वह somni is actually coming from the word sleep. Somnambulist is a person who's walking. लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो कि बोलता है सोते हुए, that is a somniloquist. तो ये यहाँ पर आप याद रख सकते हैं. One who walks in their sleep is an somnambulist. So यहाँ पर ambul शब्द का अर्थ होता है चलना. So somni का अर्थ होता है सोना. So somnambulist is a person who is walking in their sleep, but one who talks in their sleep, अपने talk में जब वो सोते हुए बातचीत करते हैं उनके लिए हम somniloquist शब्द का प्रयोग करते हैं. So somnambulist is a person who is walking in the sleep and somniloquist is a person who is talking in their sleep. One who breaks images or church images is actually called an iconoclast. Iconoclast is a person who is breaking images or church images. That person is called an iconoclast. One who retires from society to lead a solitary life, to live a solitary life is called a recluse. तो वो society से चला जाता है, to lead a solitary life एकांत में is called a recluse. One who has special skill in judging art and music is a connoisseur or a connoisseur. So is a connoisseur ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही special taste, refined taste रखता है. Then a cluster of houses in a village is called hamlet. एक cluster जो होता है of houses in a village, that is called hamlet.
A case in which the sword is kept, sword को जिसमें आप रखते हैं, that is called a sheath. Again, this is important. So this is sheath. A case in which you're keeping the sword is a sheath. A cure for all diseases is panacea, right? So that is the correct answer. यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं. The 33 one word substitutes that we've looked at, आप इनमें से 5 one word substitutes का कॉमेंट सेक्शन में sentences भी बना सकते हैं और उनके यूसेस को मेंशन कर सकते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू द मेन सेट, दैट इज सेंटेंस कंप्लीशन के सेट 2, प्रैक्टिस सेट 2 को हम कवर करेंगे. यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 15 क्वेश्चंस देखेंगे दैट आर गोना बी रिलेटेड टू योर सेंटेंस कंप्लीशन. Let's just start looking at them together. The first is, the mounting pressure was so overwhelming that he ultimately dashed to her wish. That he ultimately, आप किसी you give in to someone's wish. यहाँ पर again grammar और phrases की knowledge से आप इसको solve कर सकते थे. The mounting pressure was so overwhelming that he ultimately gave in to her wish. उन्होंने दे दिया to her wish. The transfer of territories could not take place because one state dashed the findings of the commissioner. Because one state, यहाँ पर देखिए सारे same हैं, but disputed is the most appropriate. So the transfer of territories could not take place because one state disputed the findings of the commissioner. The bureaucrat was dashed for his role in the scam. The bureaucrat was actually indicted. You are indicted, right? So that's the correct usage. He was criticized. It's actually, meanings are very similar. Lekin most appropriate is this. Indicted becomes correct. The bureaucrat was indicted for his role in the scam. The communalists represent the dash of everything noble we have inherited from our culture and history. So the communalists represent the, देखिए communalist जो है ये बुरी चीज़ है, represent dash of everything noble that we have inherited from our culture. So it is actually antithesis will be very correct. यहाँ पर antithesis correct हो जाएगा क्योंकि the communalists represent the antithesis of everything noble. Antithesis बिल्कुल opposite, they represent बिल्कुल opposite antithesis of everything noble we have inherited. Antagonism इतना appropriate नहीं होता है. Immorality बिल्कुल गलत. Antidote भी नहीं है. Antidote is a kind of a cure that you're using. So यहाँ पर antithesis is most appropriate. The government is confident that the standard of living will begin to dash again soon. The government is confident that the standard of living will obviously revive की जगह यहाँ पर rise becomes most appropriate, वो बढ़ेगा. So government is standard of living rise होता है, it either rises or it decreases, right? So the government is confident that the standard of living will begin to rise again soon, right? The soldiers were instructed to dash, restrain and handle the situation peacefully. The soldiers were instructed to exercise, ये देखिए exercise restraint. Again ये phrase की knowledge है. You always use restraint. You should exercise restraint in your dealings with others. You should exercise restraint while talking to elders. तो ये phrase ही इकट्ठे use होता है. तो ये आपको याद रखना है, एक तरह का collocation आप कह सकते हैं. So the soldiers were instructed to exercise restraint and handle the situation peacefully. My friend took his first pay to the bank to dash it in his account, to deposit it in his account. So my friend took his first pay to the bank to deposit it in his account. My friend took his first pay to the bank to deposit it in his account. Family planning is essential for curbing the rapid dash in population. Family planning is important, is essential for curbing the rapid increase in population. Spurt की जगह increase will be the most appropriate. Rapid increase, there's a rapid increase, right? So ये भी एक तरह का phrase which is used often together. The ties that bind a family together are dash that they can hardly withstand any strain. The ties that bind a family together are actually very tenuous. Ties are always tenuous. ये जो ties शब्द है ये अक्सर हम tenuous कहते हैं ties को, बहुत ही नाजुक. So ये नाजुक is tenuous. So आपके जो रिश्ते होते हैं वो नाजुक होते हैं, जैसे हम हिंदी में भी कहते हैं. ठीक उसी तरह हम इंग्लिश में ties को tenuous के साथ ही यूज़ कर सकते हैं. So the ties that bind a family together
together are tenuous that they can hardly withstand any strain. The stenographer is very efficient. He is dash to his firm. The stenographer is very efficient. He is actually एक तरह का वो asset है. He is an asset to his firm. He is an asset. So asset is more appropriate. All these are also meaning the same thing, blessing, boon. लेकिन asset यहाँ पर is most appropriate because you are an asset to your firm अगर आप अच्छी तरह से काम करते हैं. The young man lost his way in the forest and found that he had become. So the young man lost his way in the forest and found that he had become a query to the dacoits. So enemy नहीं होगा, adversary भी नहीं होगा. Query to the dacoits because he was lost also, so he can't be very brave in dealing that. Query is most appropriate. He sold property because he was under a lot of debt. You are under a lot of debt. Loan नहीं कहेंगे, so debt is most appropriate. So therefore he had to sell his property because he was under a lot of debt. He was an dash who was fond of weird pets. He was an eccentric who was fond of weird pets. So he was an eccentric who was fond of weird pets. Ambitious नहीं कहेंगे, इमोशनल नहीं कहेंगे, वो मतलब एकदम वियर्ड आ रहा है तो eccentric ही मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा. यहाँ पे लॉ ऑफ पैरेललिज्म यूज़ हो रहा है बिकॉज एक जो चीज़ सेंटेंस के स्टार्टिंग में है वही एंड में होना चाहिए, तो वो खुद पागल है. He was an eccentric who was fond of weird pets. He bought new shoes last month but they are already dash out. But they are already worn out. Again phrase worn out आप साथ में यूज़ करते हैं. So he bought new shoes last month but they are already worn out. He knew everything better than anybody else and it was an affront to his dash vanity that you should disagree with him. It was an affront to his overweening vanity. Overweening vanity के साथ हम अक्सर overweening का ही प्रयोग करते हैं, बहुत ही ज़्यादा घमंड. that you should disagree with him because उसको लगता था कि वो सब कुछ ज़्यादा अच्छी तरह से जानता है. overwhelming नहीं होगा, overwrought नहीं होगा, overstrung नहीं होगा. again vanity, this is also a phrase which is commonly used. overweening vanity, बहुत अधिक vanity जहाँ पर आप किसी और से agree नहीं करते हैं. तो यहाँ पर हम लोगों ने 33 वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स को रिवाइज़ किया और एक सेट 15 क्वेश्चंस का सेंटेंस कंप्लीशन का देखा. अगर आपको कोई भी डाउट है एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़कर अपने डाउट्स वर्बल एबिलिटी से रिलेटेड सॉर्ट कर सकते हैं.